Okay, so let me guide you first about the group discussion. The topic is going to be very, very interesting. It is about the youngsters only, and you all are the youngsters, right? We all are the youngsters over here, and we want to discuss such topic. कि एक क्वेश्चन आता है कि we all know कि drug usage बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, right? तो इस चीज पे क्वेश्चन है कि who is to be blamed for drug abuse among young people? Who is to be blamed for drug abuse among young people? First of all, note down the question and I'll guide you what you have to speak, how you need to speak on that topic. Okay. So I'm going to give it the chart. One more person has just joined, I think. Ayush is there. Ayush, can you hear us? Because we have already just begun. Yes, ma'am. Just switch on your video. Okay. Ayush also training for the first time? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. no worries. I'll guide you again about how you need to do a group discussion. What are the things, how you need to introduce, how you need to initiate, how you need to be in the body part. Okay. पहला topic है आज का, who is to be blamed for drug abuse among young people. Noted? Can I start now? Just giving you some of the explanation. Then you will have some time to think also. First thing, keep into your mind, English में discussion करनी है, हिंदी में करनी है, blend में करनी है. Up to you. No barrier in that. Language के basis पे कोई barrier नहीं है. You can go for your own language skills, जिससे भी आपको easy way में आप convey कर सकते. Second thing, it is a question. Introduction कैसे करते हैं? मैं हमेशा बोलती हूँ 5 चीजें. Good morning everyone, greetings to everyone. सबसे पहले wish आएगा. फिर the topic of today's discussion आप बताओगे who is to be blamed for drug abuse among young people. Or the topic of today's discussion is quite critical one. The question arises. इसको किस तरह से dramatic लेकर आप start कर सकते. फिर इसमें एक ये चीज करनी है इंट्रोडक्टरी लाइन. वी ऑल नो दैट ड्रग अब्यूज इज ऑन द बून, कि ड्रग बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं और क्या हो रहा है, उससे बहुत जैसे क्या हो रही है, एक्सप्लॉइट हो रही है, यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में देखा जा रहा है. एक इंट्रोडक्टरी लाइन हो गई. उसके बाद यू जस्ट पुट अप योर ओपिनियन कि आपके अकॉर्डिंग किसको आप ब्लेम करते हो. Do you blame, I think, the bad parenting? मैं एक एग्जांपल देती हूँ. मैं तो बैड पेरेंटिंग को ब्लेम करती हूँ. पेरेंट्स से बच्चा है वो नहीं कर पाता, शेयर नहीं कर पाता चीजों को, and that is why he starts going on the wrong path. And you have lots of other things to discuss about it. I gave you my perspective, right? So maybe one of the perspective is bad parenting about it, and then you open the house for discussion. ये 5 चीजों से आपकी इंट्रोडक्शन बनती है, right? Then comes the body part, जिसमें आप किसी के साथ जब भी, जैसे सपोज अभिनव started, तो अभिनव को बोलोगे yes I agree with you अभिनव, I would like to add a pointer, I would like to quote an example. मैं कोई कोट, आप हिंदी की कोट भी दे सकते हो, कोई मूवी से रिलेटेड. अगर आपने उड़ता पंजाब देखी है, I not seen it though, but we all know that was on drug abuse which is there on heights in Punjab and all, right? किसी भी चीज की कर सकते हो कि इवन मूवीज में भी हमें दिखाया जाता है कि बच्चे किस तरह से डायग्रेस होके सीधे ही वहीं पे चले जाते हैं, ड्रग अब्यूज की तरफ चले जाते हैं. तो जो आपके आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म इट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, right? Then you give the conclusion. Conclusion में किस तरह से करते हो आप? You give it as a conclusion, जहाँ पे एक बच्चे ने पहले बोल दिया मैंने conclusion देना है, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, पॉइंट्स नोट करना शुरू कर दिया जो 3 बेस्ट थे. तो नेहा ने बहुत अच्छी कोट बोली थी, किसी मूवी का एग्जांपल दिया था, शुभम तक्का ने कोई और एग्जांपल दिया जो बहुत इंटरेस्टिंग था, या अरुणा ने दिया कुछ. तो वो आप 2-3 वैलिड एग्जांपल कोट करके साथ में नोट कर दोगे कि इसने ये क्वेश्चन दिया था. इवन आप आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो. तो विकास ने बोला कि बैड पेरेंटिंग इज वन रीजन. आगे से अरुणा या अभिनव पूछ सकते हैं, how do you think विकास बैड पेरेंटिंग, parents they never guide back to your, you can say, kids and all that, आपको क्यों लगता है? तो आप क्वेश्चंस के बेसिस पे भी एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हो. दैट शोज योर पार्टिसिपेशन लेवल. ओके. और कंक्लूजन में बस आपको ये बोलना है दैट ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर ग्रुप आई एम गोइंग टू कंक्लूड and we had a very fruitful discussion, healthy argument, और we had an exchange of thoughts. कुछ भी बोलो कि कैसा exchange of thoughts था. फिर आप उसमें बताओगे that multiple opinions were being shared. अभिनव quoted about this, शुभ ढाका quoted about this, कुछ ऐसा एक आधा दे दिया जो बहुत prominent था. And yes, we agree कि बहुत ज्यादा drug abuse हो रहा है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, youngsters can be on the right path. Thank you. That's it. अब समझ आया किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, बीच में कैसे करना है, कंक्लूड. मैंने तुम्हें सिर्फ स्केलेटन दिया है, कुछ अपनी लाइंस तुम लोग ऐड करोगे. Done? Brief about it. Shubham Thaka and I think Vikas or Neha, तुम least attend करते हो. So it is clear to you about the topic? Okay, fine.
So introduction today will be given by whom? कौन करना चाहता है introduction? Okay, Neha wants to go for the introduction. Conclusion? Who wants to go? Okay, Shivam Dhaka will conclude then. Okay, so this GD will carry for 12 minutes. I'll keep it out. You are 5 in number. Okay, so it will be 12 to 14 minutes. I'll see according to the pointers you are exchanging. धीरे धीरे मैं increase करती जाऊंगी, ठीक है? But in the 12 minutes, make sure कि आप minimum 3 times participation जरूर करो. ये भी मत करना कि आप एक टाइम पे ही सारे पॉइंट्स बोलते हो, ये गलत होता है. एक टाइम पे सब कुछ नहीं बोलना. मेक इट अ थॉट प्रोसेस कि एक टाइम पे एक बहुत अच्छा पॉइंट देके रिलेटिव एंड एग्जांपल निकाल दिया. बहुत अच्छे से कोट्स करना. जनरल नॉर्मल एग्जांपल्स कोट करो, अपने कॉलेज डेज के कोट करो. एनीथिंग अंडर द स्काई यू कैन. I'll give you 4 to 5 minutes to think about this topic. It's 3:11 by my side. I'll give you a call by 3:15 to 3:60. Okay. Till then, keep your videos on and start writing as many pointers as you can. Clear with it? Good. Yeah. Go ahead, guys. Just start noting the pointers. जो भी दिमाग में आ रहा है, examples आ रहे हैं, बना लो. Okay, I guess we can start now. So I think Neha, go ahead with the introduction. Yes, ma'am. Hello everyone, my name is Neha Verma and I got the opportunity to start the group discussion, and the topic given to us for the group discussion is who is to blame for the drug abuse among the youngsters. And in my opinion, I believe that one of the reasons that why youngsters are going towards the drug is the excess of the drugs, that is easy availability of the drugs. Now the youngster can avail the drugs very easily. This is one of the reasons, and there are other reasons as well. For example, to fit in, sometimes they have their friends and the peers who are doing drugs, so just to fit in they also try these drugs. So these are the reasons. uh, and now i and now I invite all of you to participate in the group discussion. Yes, exactly, Neha. Agree with you. And here I need to add another point also. Uh, Today, the most of the youngsters are going for the drug practices because of so they are feeling that they are being individually. And bad parenting is also one of the uh, reason for youngsters are going for drug practices, because nowadays so many parents are not there, not spending the time with their children. They always going upon the work and they are not to spending a time with the youngsters. So this is also one of the reasons, and for the youngsters who are going for the drug practices, and they are Yes, going for it for the short time happiness, but they're not understanding the long term consequences of usage of drugs. yes, Abhinav, I agree with you, and I want to add some points like there is some reason like social media influencing for drug refusing, like movies and many things. And one thing is also like stress is also is one factor to youngster go for a drug, and uh, yes, stress Yes, is. and exactly. sometimes Yes, and exactly. I sometimes agree with Aruna. And here I need to add another point also. The stress is one of the main reason to addiction of the drug. But there is a very another alternatives also, like meditation or talking to the parents or otherwise talking to a good friends. but use of drug gives the instant feeling of the pleasure. That's why youngsters tends to go towards the use of drugs. In my opinion, I Yes, Yes. think that. yes, Yes, exactly. I'm also telling that.
Yes, the drugs will give the instant happiness, but in the long term, our nervous system will damage. The interest will not understand the consequences. That is the main Same reason. time, it increases the risk of drug addiction as well. We can Youngsters get al- addicted to it. we can also blame our education system, our school or colleges. We should teach children from childhood about how to handle with stress rather going for drugs, etc. Yeah, And and there should be drug awareness campaigns as well, so that we can make aware people and youngster about the drug uses and its effects and side effects. yes, Yes, and अगर exactly agree स्कूल with और कॉलेज में Neha. Here, स्कूल here और I need to कॉलेज में add another बताएंगे. point also. Here I You need know, to I just add. want to few points also. That Yes. habit is also one of the reason for this, because in younger age the people addicted to cigarette like nicotine products, and as they grow up, this kind of drugs they are just involved by the friendship, etc. And right now in current scenario we can see the involvement in movies, because in movies there is not having any government control. And in especially I think, it's my opinion, in South India I saw many movies there, the people are so much attached to their actors and all, they feel like they are just god like. Okay, Yes, exactly. I agree with you so because yeah, movies will in show this, the influence on the youngsters also. And yes, in yes, case I need to add another point also. The government is also taking this drug addiction is a very seriously. So that's why in the every movie scenario they was keeping that in the sideline, smoking causes and injurious to health also. They was doing the lot of best, and actually the government also spending more money on the drug addiction organizations, and the police control also, as well as they keeping they was getting the yes, new laws to And control the one yes, of drug addiction. yes, And you yeah, know, Abhinav, one I of one the of the reason reason. why this is very popular among youngsters is that these young people like to experiment new things, especially the things that are very thrilling and daring. So they like to try the drugs and just to know about it, and then they don't know the consequences, and that's how the cycle goes on and yes, on. yes, Neha, I agree with you. And one reason is show off, like show Yes. off in among peoples. So this is one reason for using drug of Friends, people. And Aruna, I in just want colleges, to add one many more people point. go to pub and do party, and show off is one reason. Aruna, I just want one more point, which is I think breakups. Right now, breakup is the biggest thing right now, where the people get so much depressed by that, and they start taking this kind of drugs, etc. the And whole also, root cause is education system only. I think in school we should teach the moral values to children, how to deal with all these things Yes, from exactly. basics I and agree what with are the all of your consequences. statements. And We that's can why teach about them consequences of doing these all things. Yes, bad And parenting blame is yes, not only education exactly. only. consequences. Yes, exactly. I agree with all of your statements. Here, I need to add another point also. Here, the government want to take the strict actions against to the drugs, and we want to keep the drugs committees and who are affected by the drugs. We want to keep good campaign for drug addiction centers also and drug rehabilitation centers, and we need to develop more. And the students was to want to visit the drug addiction drug rehabilitation centers because why they are going to do as now so many members are struggling for the life to Like rebuild their. government can also take action against easy supply as Neha mentioned. Yes, Shubham, and I want to add another dimension. Like there are some precautions we need to take for prevention of drug addiction. Like we did yoga, meditation, and some skills related program. Like in my college, in many colleges, skills related program is also there. So we need to focus on that for prevention of drug. And Like here the I need to add another point also because the most of the drug addiction cases are in the teenagers mostly, and teenagers and who are the age of 25 below persons.
there are only drug addictions are more, because in this age is a very crucial age in the every person, because that is the age if we work hard we'll get in the top position, if we are not working very hard we are get the least position. So in that only we are most of the our hormones is also go on exploding, we want to exploit anything. It's like that they also choose the drug, the trying a drug is also one type of the addiction. So we need to Yeah, control at that situation of the age. The parents must to have to talk to them, and you want to settle in your life to keep them like that. So many of the parents yeah. are not As doing I Yes, it. just and to want as to Neha perform elaborate. better in mentioned about new yes, I and to just want to perform experimentations. better elaborate in the Neha's point. sports Like, as well. These youngsters are taking drugs to sport and to enhance their metabolism and activity so that they can perform very well. And this is one of the reason as well. We can blame this Yes, Yeah, I scenario. exactly agree in with my thinking, Neha. bad parenting, I can elaborate. Like in bad parenting, there is means in my point of in my point of view, if they have a lot of money and so they are just continuously involved in business work, and they are not giving attention to their children. So they have not having any lack of money. So by the friend circle, they get easily this kind of. So I think bad parenting is also one of the major reason. Yes, Yes, lack exactly, of because I communication and lack of agree. awareness. Yes, I Yes. agree and exactly with Neha and Vikas' statement. Here, I need to add another point also. The bad friendship is also one of the very good reason for the drug addiction. And in the name of the celebration, they are going for the drugs, and party. they are not understanding the consequences. Because after that, it may be a law and order issue also. If the drugs was they was taken the total events, they drive a car, they go up on the accident, and so many consequences happen. They will not understanding. So that's why Yeah, I'm thinking that parents want The to peer take care about pressure. their We can call children. it as the peer pressure. Yes, oh yes, right. You are right. Yes, the peer pressure. yeah. And like some of our heroes जो यंगस्टर का ऐसे वो हीरो टाइप होते हैं वो खुद करते हैं तो उनको देख के भी ऐसे मोटिवेशन मिलता है लाइक शाहरुख खान का जो शाहरुख खान का जो बेटा आर्यन खान था वो पकड़ा गया ऐसे लाइक वी मोटिवेट फ्रॉम देम यंगस्टर Yes, I agree with Subham also, because so many members are thinking that we want to be like Ken Shah Rukh Khan kid or whatever it may be. And they was not thinking that how the Shah Rukh Khan will go to that stage, because he did so much of the hard work, but not like an Aryan Khan did. So it was getting a bad name to our career as well as to our parents also. The youngsters must want to understand the what are the consequences for using the drugs. Okay, guys. I think the conclusion needs to be fetched out now. Shubham, Dhaka, go ahead with the conclusion. यस मैम सो मैम on the behalf of our group discussion we have discussed many points. Neha discussed about easy supply of drugs and new experiments to get thrill by youngsters. And Vikas discussed about bad company or bad parenting. Abhinav discussed about like mass media effect or South movies. And Aruna discussed about mass media and stress. And my view is like lack in our moral values, bad parenting and education system, and etc. Chalo, good try. I would say your first was there, but yeah, it was a good try from your side. Now let's go with the feedback of each one of you. Before I point out to you the starting with the Neha. Neha is there? Yeah. Neha started with a very good run, the kind of fluency you maintained and the confidence you had. Your introduction was very smooth. The only thing which was missing in your introduction was that you did not give any introductory liner, any starting about, you could mention about what is drug abuse, कैसे बढ़ रहा है, कोई एक इंटरेस्टिंग लाइक ये तो आजकल का बहुत क्रिटिकल इशू है कि जो यंगस्टर्स है बहुत मूव कर रहे हैं, फिर अपना ओपिनियन ऐड करना है, एक मीनिंग, एक डेफिनेशन या कोई ऐसी लाइनर ऐड करनी है, बस वो आपका मिसिंग था. अदरवाइज योर इंट्रोडक्शन वाज वेरी गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? आई लाइक दैट. देन वाज अभिनव. अभिनव स्टार्टेड विद बैड पेरेंटिंग, राइट? मेरा पॉइंट ही उठा के मुझे ही बता रहे हो, है ना? तो बैड पेरेंटिंग मैंने दिया और वही पॉइंट बोल दिया. चलो नो वरीज, बट वो ठीक था. अरुणा का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और मूवी.
तुम लोग की गलती बता कहाँ थी, वेयर इट स्टार्टेड। अब शुभम ने पॉइंट दिया बाद में, आई थिंक उसके बाद अभिनव का पॉइंट आ गया अबाउट दिस टॉक टू द पेरेंट्स, वही पॉइंट दोबारा। तुम लोग रेपिटेशन पे क्यों आते हो, किसी का पॉइंट रिपीट करके बोलते हो। शुभम काका ने दो बारी पॉइंट्स दिए जो अच्छे थे। एजुकेशन, मेरे फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा, दैट वाज एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करना चाहिए कि गाइडेंस नहीं मिलती है। सेकंड टाइम में जो उसने पॉइंट दिया, आई थिंक दैट वाज सिमिलरली बेस्ड ऑन एजुकेशन सिस्टम। कभी भी कंटेंट को, और कंक्लूजन में भी एजुकेशन सिस्टम, अगर नहीं तुम मैम, सोचो, उसके मेरा बाद ऐड पॉइंट कर दिया, थोड़ा थोड़ा ऐड हीरो कर वाला दिया। था ना, कि हम हाँ, हीरो को देख के मोटिवेट होते हैं, ऐसा कुछ। तो वो एक एक्स्ट्रा था, बट आपने पहले दो पॉइंट्स क्या दिए, एजुकेशन एजुकेशन। कभी भी देखना, यू डोंट हैव टू रिपीट योर कंटेंट सो इजीली। ये लगेगा कि कोई और नया आता ही नहीं है, आपको एक ही पॉइंट लिखा था और उसको ही मैम एड्रेस करके बोल रहे हैं। ऑल पॉइंट ठीक है, डिस्कस ऑलरेडी। हाँ, तो वो आ सकता है। अवेयरनेस लिख सकते थे कि बच्चों को सही गलत में डिफरेंस नहीं पता। आजकल हम क्या क्लासेस लगती है ना, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, दीज क्लासेस आर देयर फॉर द स्टूडेंट्स इन द जूनियर क्लासेस। क्या जो जूनियर क्लासेस में ये टाइम होता है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन ट्राई, क्या ट्राई नहीं करना है, कुछ इन चीजों पे गाइडेंस नहीं है। स्टिल द अवेयरनेस इज वेरी मच लेस। दे कैनॉट टॉक डायरेक्टली टू देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स से वो बात नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजें होती है, नंबर ऑफ थिंग्स। You yourself cannot talk to your parents. You hide number of things. You can talk to your friends, but not to your parents, right? तो वो भी क्या चीजें आ जाती है। ये हमारी अवेयरनेस, अपब्रिंगिंग और एजुकेशन सिस्टम, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को ये टर्म्स नहीं याद आ रही थी, आई थिंक। तुम लोगों ने पीयर प्रेशर नेहा ने जाके बाद में दिया, जैसे कुकरेला ने बोल दिया बैड फ्रेंड्स। आई थिंक विकास ने भी स्टार्ट किया था जब इट वाज हैबिट बन जाती है, ठीक है, दैट वाज राइट। इसने मूवीज पे अटेंड किया, विकास का वो पॉइंट भी ठीक था। विकास की नेगेटिव ये थी, पार्टिसिपेशन कम थी, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लगा। और सेकंड चीज, आपके पॉइंट, पहला पॉइंट बहुत लंबा, मैंने हमेशा बोला विकास, पॉइंट को छोटा, जितना छोटा कंसाइज रखोगे उतनी आपकी फ्लुएंसी मेंटेन होती है। ठीक है, तो आपकी फ्लुएंसी में वहां पे गड़बड़ होती है। अभिनव के पॉइंट्स में ये था, अभिनव पार्टिसिपेट बहुत अच्छा कर रहा था, द पार्टिसिपेशन लेवल ऑफ अभिनव वाज वेरी गुड, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू फेच कि कभी किसी से बात करके आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। ये पर उसकी टाइम अच्छा था, लेकिन कंटेंट वाइज नेहा का कंटेंट बेटर। ठीक है, हर एक को अपना अपना एक स्टेमिना, अपना वो पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे अच्छा हूँ, कहाँ पे लैक करता हूँ। तो हम ठाकर की सबसे वो मुझे लगी थी, जब आपने वो मूवी का बताया ना कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, हम कहाँ बोलते बोलते क्या हो जाते हैं, इनफॉर्मल हो जाते हैं, कभी भी जीडीज में इनफॉर्मल। ठीक है, दैट इज अ बिग नेगेटिव ट्रेड। लास्ट टाइम क्या हुआ, वो आपस में जब मेरे दो स्टूडेंट्स से वो बातें लगे, यार ऐसे नहीं होता, वो नहीं होता, यार नहीं स्टार्ट कर देना ना एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही कन्वर्सेशन नहीं होती है, या अपुन ने ऐसे किया, अपुन वाज अ वर्ड व्हिच वाज बीइंग यूज्ड। तो ये सारे वर्ड्स इनफॉर्मल स्लैंग्स हैं जो कि हम जीडी में यूज नहीं कर सकते हैं। से नो, आपकी इट गेट्स इनफॉर्मल। ठीक है, तो इनफॉर्मल का होने का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद मैं नेक्स्ट करती हूँ, आई थिंक अबाउट द पॉइंटर्स, जो मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रही थी। अभी तो नेहा पॉइंट प्लेजर मिलता है, ठीक है, इंक्रीज रेट वो ठीक है। देन इट वाज यंग पीपल एक्सपेरिमेंट करते हैं नई चीजों को। इन कॉलेजेस में पार्टी वगैरह का पॉइंट आ गया। नेहा नेहा बस दो चीजें ऐड करो, अपनी फ्लुएंसी पे यू हैव टू वर्क ऑन इट, दैट यू टू बी, दैट इज नॉट द फ्लुएंसी आई विल से इन द टर्म्स ऑफ कि आप कैसे बोल रहे हो, दैट इज गुड, योर वे ऑफ स्पीकिंग इज गुड वन। द वे ऑफ एड्रेसिंग, व्हेनेवर यू स्पीक यू नीड अ हेडर इन योर इंट्रोडक्शन। इसमें हेडर्स हमेशा बोलती हूँ, लाइक जैसे अभिनव वो हर बार बोल रहा था, आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंटर, आई वुड लाइक टू से सर्टेन थिंग। नेहा में नहीं था वो पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपका फ्लुएंसी अच्छा है, पॉइंट्स ठीक बोल रहे हो, हेडर्स याद करने शुरू करो, उससे और बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो हर पॉइंट में नेक्स्ट टाइम क्या करना है, टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। आई थिंक पीयर प्रेशर इज अ बिग थिंग, बैड पेरेंटिंग इज अ बिग थिंग। उससे पता चल जाता है कि बैड पेरेंटिंग बोल दिया तो अंदर क्या बोलोगे, पीयर प्रेशर बोल दिया तो अंदर क्या बोलोगे, एजुकेशन सिस्टम बोल दिया तो अंदर क्या बोलोगे, अवेयरनेस बोल दिया अंदर क्या बोलोगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। हेडिंग दे दिया करो, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लेस ऑफ अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स। तो ऐसे हेडर्स हर एक के लिए है, हेडर डाला करो अपने वर्ड्स पे, उससे आपके पॉइंट्स की वैल्यू ज्यादा अच्छी होती है। क्लियर अबाउट इट। सेकंड, आई थिंक मैं कहूंगी, नेक्स्ट आई कैन गो टू अभिनव। अभिनव के पॉइंटर्स बैड पेरेंटिंग से स्टार्ट हुआ, दैट इट वाज, जहां पे आप लोग की गलती कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आई टेल यू, जहां पे तुम लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया सॉल्यूशंस पे। आई थिंक अभिनव ने मैम वो स्टार्ट मेरा किया। हाँ, आई एम गोइंग कम टू यू और हम क्रूशियल, हाँ अभिनव। अरुणा ने स्टार्ट कर दिया प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस की बात कहाँ से आ गई, अभिनव ने पहले ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर। जब हम बात करते हैं कि ब्लेम किसको करना है, अगर तो तुमने सारे ब्लेम्स डिस्कस कर लिए हैं, तो जाके बात करो कि आई थिंक नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन अप्रूव दिस इशू।
हाउ वी कैन एंड द ड्रग अब्यूज। तो तुम जाके हेडिंग दो और फिर उसमें बात करो। तुम इसी में उसकी बात करो फिर तुम दोबारा उसमें आ रहे हो, कोई वो नहीं बोली ना, डायरेक्शन लेस है। तो डायरेक्शन लेस नहीं जाना। अब आपने स्टार्ट कर दिया, अरुणा ने स्टार्ट कर दिया, आपने ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर, अरुणा ने प्रिकॉशंस, फिर अभिनव ने बोला कि क्रूशियल एज होती है, फिर विकास ने बोलना शुरू कर दिया फॉर बैडमिंटन। सारी जो हमारी जीडी की डिस्कशन थी वो डाइग्रेस हो गई, दैट इज इट वेंट पॉइंटलेस किसी और टॉपिक पे। फिर तुम वापस आए। इसमें क्या होता है, कोई पर्सन को बहुत अटेंटिव होना पड़ता है। जैसे अरुणा ने वो पॉइंट बोला था कि दैट इज अबाउट ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर, वन कुड यू से दैट राइट नाउ फर्स्ट लेट्स कंप्लीट द डिस्कशन अबाउट दिस थिंग कि who is to be blamed, and then we can say that yes how we can improve the things about it. Improvement इज लास्ट, गवर्नमेंट क्या कर रही है लास्ट, चैलेंजेस क्या है लास्ट। जब सारे पॉइंट्स खत्म हो जाए तब कोई बंदा शुरू कर दे। ठीक है। डाइग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है जो ग्रुप डिस्कशंस में जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, वो तुम्हें नहीं करनी है। क्लियर हुई? तो यहाँ से वो गलत था, सारा जीडी गलत हो गया था वहां से आप लोग का। उसके बाद आई थिंक जब पीयर प्रेशर आया ना, जब आई थिंक अभिनव ने बोला बैड फ्रेंडशिप होती है, और फिर नेहा ने बोला कि उसे पीयर प्रेशर बोलते हैं, वहां पे फिर शुभम ने बोला कि मूवीज को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो आर्यन खान एंड ऑल, वहां पे तुम्हारा दोबारा जाके ठीक हुआ था। ठीक है। तो गड़बड़ वहां से स्टार्ट कर दी थी, डाइग्रेशन मत करा करो। उसके बाद आ गया, आई विल कम टू नेक्स्ट इज विकास। विकास की मुझे दो तीन कमियां बस की लगी, पार्टिसिपेशन कम लगी मुझे। जैसे विकास बाकियों को देखो, दे वर स्टार्टिंग, थोड़ा लाउड बोल लो, अपने माइक को क्लोज रख के, ताकि आपकी वॉइस कॉन्फिडेंस रेस करो अपना। ठीक है। पॉइंट को छोटे छोटे बनाओ, हेडर यूज करके बनाओ। जो आपने पॉइंट दिए थे दो, हैबिट वाला पॉइंट अच्छा था, मूवीज वाला पॉइंट बहुत अच्छा था, उसको कैसे लिंक कर सकते थे, टॉकिंग अबाउट द एंटरटेनमेंट सेक्टर। वी हैव सीन की पीपल, जैसे कबीर सिंह मूवी का नाम देते हैं, देयर यू कैन से, अभी एनिमल मूवी आई थी, आई थिंक आई नॉट वॉच्ड इट, बट वहां पे इन्होंने क्या दिखाया एक तरह का कि ये चीजें कर रहे हैं, दे लुक वेरी कूल टू द स्टूडेंट्स, दे लुक वेरी कूल टू द पीपल, एंड पीपल स्टार्ट फॉलोइंग देम कि ठीक है भाई अच्छी बात है। इवन फॉर देम बीटिंग और यू कैन से रिलेशनशिप में डिच करना, दैट इज ऑल नॉर्मल, बिकॉज दैट इज बीइंग सीन ऑन द स्क्रीन, एंड स्टूडेंट्स फील लाइक कि वो एक एज होती है, लाइक अ क्ले, जैसे बोलते हैं ना एक नया बच्चा होता है, वो क्ले की तरह होता है, उसको कैसे भी मोल्ड कर दो वो हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये चीजें डिस्कस करो, बोलो मूवीज के बारे में, तुमने इतनी मूवीज देखी है, मैंने तुम्हें उड़ता पंजाब बोला अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, मैं तुम्हें कबीर सिंह का एग्जांपल दे दिया, एनिमल का एग्जांपल दे दिया, और भी कितनी होंगी मूवीज ऐसी। ठीक है। दो लाइंस लिखी होती हैं, बट लाइंस लिखने से जो चीजें स्प्रेड अप हो रही है, जैसे इन्होंने बोला जो फेमस होता है हमारा, सपोज किसी को रणवीर सिंह, आपको याद है देयर वाज अ मूवी क्रिश 3 वाज देयर, बहुत लोगों ने अपनी लाइफ को लॉस कर दिया था, दे लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज पीपल ने देखा कि क्रिश कैसे उड़ के आता है ना, एंड पीपल इन द थिएटर्स आल्सो दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड पीपल स्टार्टेड लूजिंग देयर लाइव्स। तो लोग फॉलो करते हैं, पैटर्न होता है फॉलो करने का। ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी डिस्कस करा करो कि मैम एग्जाम्पल ओवरलैप हो रहा रियल था, लाइफ। हाँ, ओवरलैप हो जा रहा था इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा था। ओवरलैपिंग उसमें जैसे करना है ना, जैसे ओवरलैप हो रहा है तो टॉकिंग अबाउट दिस, एडिंग टू योर पॉइंटर, फिर ऐसे करो, एडिंग टू योर पॉइंटर, टॉकिंग अबाउट दिस, लेट मी कोट एन एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन इंसिडेंट, यस यू आर अभिनव यू आर टॉकिंग वेरी राइट, लेट मी कोट यू एन एग्जांपल, ओके हैव यू हर्ड अबाउट द एग्जांपल ऑफ एनिमल, देयर आल्सो दिस थिंग वाज सीन। बोलने का तरीका वही है, ओवरलैप नहीं होगा। बस इसको थोड़ा अपने आप में वो करो, हाईलाइट करो कि मैं बोलू जाऊँ रोज। ठीक है। मैम आई हिंदी थिंक में बोल। हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला नहीं, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो, जिस मर्जी में बोलो, दोनों में मिक्स करके बोलो, पर बोलो। ठीक है। दैट इज द मेन यस पर्पस। मैम। कोई उसमें मार्क्स ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, किसी को इंग्लिश आती है हिंदी आती है, कोई फर्क नहीं होता उस चीज का। ठीक है। इट इज इक्वल। हाउ यू कैन बीट द अदर पर्सन, किसी को चुप करा देते हो जीडी में, दैट इज द बेस्ट वन। क्या आपके क्वेश्चंस को देख के बंदा बोले कि नहीं यार ये सबसे अच्छा कर रहा है, वो जीडी है। ठीक है। अब जैसे सुनने में पता चल जाता है कहाँ पे कोई बच्चा गलती कर रहा है। अब अरुणा का आई विल से इट आउट। अरे ना, जैसे आपने स्टार्ट किया, जैसे यू स्टार्टेड अबाउट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, दैट वाज ओके, मूवी का सबसे पहले आई थिंक अरुणा ने ही स्टार्ट किया था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी स्टार्ट किया था अरुणा, द पॉइंट वाज वेरी गुड, लेकिन मैं वही चीज कहती हूँ, हेडर मिस हो जाते हैं। हेडर्स को स्टार्टिंग में करो, दैट इवन वी टॉक अबाउट दैट देयर नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स व्हिच आर गोइंग ऑन, बहुत लोगों ने सुसाइड्स की, ये की, क्यों किया, बिकॉज दे सी ईच अदर, दे स्टार्ट कंपेयरिंग देयर लाइव्स, उससे भी बहुत चीजें कंप्लीट अप होती हैं। देन इट इज ऑल अबाउट, किसी ने इजी अवेलेबिलिटी की लाइन आई थिंक सिर्फ एक बच्चे ने बोली थी, किसने बोली थी, नेहा। नेहा मैम। नेहा ने, हाँ दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि एक्चुअली दैट इज आल्सो वन रीजन, हमें इजी अवेलेबिलिटी इज लाइक लोगों को मिल जाती है, अगर आप यहाँ पे, फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, दैट देयर इज वेरी नॉर्मल, यू गो स्कूल किड्स दे आर हैविंग इट आउट। ठीक है। दो वी डोंट टेक इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट या द स्टूडेंट्स टेक इट टू एन अर्न, कि उनको बच्चों बच्चों को पता है कि चिट्टा क्या होता है, ये क्या होता है, तो वो लेकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई कम फ्रॉम अ बॉर्डर एरिया, सो ऑब्वियसली देयर कम्स अ डिस्ट्रीब्यूशन वेरी मच,
राइट। तो बॉर्डर एरियाज में सबसे ज्यादा होता है, वहां से कैसे हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, इन चीजों की बात करो। और उनको कोई वो नहीं है। हॉस्टल्स में बहुत चीजें होती हैं ये, अगर आप देखोगे हॉस्टल्स में सप्लाई भी बहुत होती है, बच्चों को सप्लायर्स बनाया जाता है। ये डिस्कशंस करो ना, तुम लोगों को यही तो डिस्कशंस करके इंटरेस्टिंग बनाना होता है। तुम्हें को ये नहीं होता रट्टा मारना है। जितना तुम्हें रट्टा नहीं, तुम जितना नरेट करके रियल लाइफ इंसिडेंट से लिंक करके बनाओगे, तुम्हारे उतना ही जीडी में ग्राफ बढ़ती जाएगी। पर वो है हम एक एक टॉपिक को कवर करते जाए। ठीक है। तो अरुणा का मुझे फर्स्ट पॉइंट इट वाज गुड अरुणा। देन जब आपने बोला, नेहा ने पॉइंट दिया कि लोगों को, यंग पीपल है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं नई चीजों में, तो उन्होंने बोला इन कॉलेजेस दे डू पार्टी, उसका ना थोड़ा ऐड करके बोला करो। यस नेहा, आई वुड से दैट यस सर्टेनली पीपल प्रैक्टिस न्यू थिंग्स। जब वो बच्चे बाहर से आते हैं आफ्टर 12 दे डू कम टू न्यू सिटीज, तो देयर दे आर एबल टू कुछ अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करके समझाया भी करो। न्यू एनवायरनमेंट में होते हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द राइट एंड रॉन्ग, अर्ली एज होती है, तो वो दे स्टार्ट पार्टीज एंड ऑल दैट, वो वर्ड्स मिस कर दिया करो। और बाकी प्रिकॉशन, फिर आपने प्रिकॉशन वाला वहां से गलत स्टार्ट, ठीक है। तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है, फिर वो चीज है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा था बट फिर लैप्स हो गया। क्लियर। सबको अपनी अपनी Okay. कमियां अच्छियां पता चला कि कहाँ पे हैं हमारे ड्रॉबैक्स क्या है। तो आपका फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन गुड वन। कंक्लूजन ऐसे नहीं होता कि हर एक का सुनाना शुरू कर देना, ठीक है, इसने ये बोला इसने ये बोला, नहीं। इट इज लाइक मल्टीपल ओपिनियंस वर एक्सचेंज, बहुत लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोली। जैसे कि अभिनव ने इस पे कोट किया था या नहीं याद, तो जैसे हमने बैड पेरेंटिंग पे डिस्कस किया, हमने अवेयरनेस पे डिस्कस किया, सोशल मीडिया पे डिस्कस किया, मूवीज पे डिस्कस किया, हमने अवेलेबिलिटी पे डिस्कस, लेकिन बोल दो 3-4 फैक्टर्स गिना दो, देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स। बट राइट नाउ वी नीड टू थिंक कि गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए, और हमें भी प्रॉपर, एक बीइंग द यूथ ऑफ आवर कंट्री, हमें भी प्रिकॉशंस की तरफ जाना चाहिए। ओनली देन वी कैन एलिमिनेट इट आउट एंड लेट्स स्टॉप दिस इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स टू द यंग पीपल। थैंक यू। ठीक है, इस तरह से कंक्लूजन करना है। अब डन। गलतियां हैं फर्स्ट टाइम, इट इज ओके फॉर विकास एंड शुभना का, इट इज ओके। नेहा, बी रेगुलर, दैट इज द थिंग व्हिच आई रिक्वेस्ट यू फ्रॉम डे वन। ठीक है, रेगुलर हो जाओ अपनी जीडीज में, इट विल बी वेरी गुड। अभिनव, पार्टिसिपेशन वाइज वेरी गुड, कंटेंट वाइज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते जाओ। अरुणा, हेडर्स यूज करते जाओ और पार्टिसिपेशन और इंक्रीज करो। अभी आज पार्टिसिपेशन कम हो गई थी, क्लियर हुआ। अब व्हेन आई एंड अ जीडी, सी इट्स ओनली यू हैव टू इन्वेस्ट 40-50 मिनट्स, 40-45 मिनट्स, राइट। पहले अगर ज्यादा बच्चों में, हम और इसको थोड़ा लंबा करेंगे, फॉर 20 मिनट्स वी विल कीप इट, ठीक है। एंड टू रिमेंबर वन थिंग, आपको ये टॉपिक अब लिखना है, अपने कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे अपने 5-10 पॉइंट्स प्रिपेयर करके रख लिया करो, ताकि कल को ये क्वेश्चन आए तो हमें डायरेक्टली पता हो। ड्रग यूसेज के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, सोशल लेवल, यंगस्टर्स हमारे में क्या चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं हमारी इंडिया की ग्रोथ में, तब भी ये पॉइंट्स डाल सकते हैं कि ड्रग्स के कारण अभी भी हमारा जो न्यू रिसोर्सेज है वो इंडल्ज है और वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। एक टॉपिक मल्टीपल वेज में आता है, तो उसको उस तरह से चलाया, चैनलाइज प्रॉपरली। क्लियर? डन गाइस? समझ आया थोड़ा थोड़ा शुभम एंड विकास? यस मैम। Yes, ma'am. डिफिकल्ट है कि इजी है? इजी है मैम। इजी है, चलो गुड। अभिनव, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो No, प्रॉब्लम? ma'am. ठीक है। Mostly no. नेहा, But only one, ma'am. I'm not able to give the introduction as well as the try conclusion to also. That is try the to, main. it is not about Abhinav that you stop trying, you have to try it out। Conclusion में try करो, intro में try करो, the more you try, I'll take it as a division, in the more students are there, I'll take it as a division। 3 बच्चे रोज introduction करेंगे, 3 conclusion, and the vice versa goes। I'll do that stage with you, पर अभी 5-6 दिनों के बाद, जिसमें हर बच्चे को प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैं इंट्रो कर सकता हूँ, मैं कंक्लूजन कर सकता हूँ, मैं क्या चीज नहीं कर सकता हूँ, ताकि आप फाइनल में वो गलती मत करो। ठीक है। Okay. नेहा एंड अरुणा, एनी प्रॉब्लम गाइस? डन? No. ओके, चलो, विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। ठीक है, बाय। थैंक यू मैम।